Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome dear students in the subject of Internet Architecture and Protocols. It's Ghulam Yasin, lecturer in Computer Science, University of Education Lahore, DG Khan campus. Dear students, our next topic is SONET. This is basically SONET, which is synchronous optical networking और synchronous optical networks. In detail हम next slides में देखते हैं इस टॉपिक को. What is SONET? These are our lecture contents which we will cover in this lecture. Introduction to SONET, SONET system, SONET frame and SONET network. These are basically 4 subtopics which we will cover in this lecture. So in next slides we will start from introduction to SONET. So dear students, let's start about SONET. Synchronous optical network is a standard for optical telecommunication transport. So in this point, this is very important that this is optical network in which we use optical technologies. Second point, we use it when we send data by optical fiber. So optical fiber is basically a medium of transmission which is a wired media, and this is a type of wired media, and this optical fiber network is used as backbone network. Like any company which is providing services to us use this type of optical fiber network. इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो स्लाइड में मेंशन नहीं है, मैं साथ आपको समझा देता हूँ. सोनेट को यूज करते हुए हम मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसफर करेंगे सिंक्रोनस मोड पर. इट मींस मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग अ सिंक्रोनस मोड, और इसको बेल कोर में डेवलप किया गया. और इसमें क्योंकि हम लाइट की बात करते हैं, ऑप्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें हम लाइट एमिटिंग डायोड एलईडीज यूज करते हैं फॉर डाटा ट्रांसमिशन. ऑप्टिकल इसमें हम यूज करते हैं, इसमें हम लेजर यूज करते हैं. और इसमें अगर हम एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में ट्रांसफर करेंगे तो हम पीसीएम टेक्निक यूज करते हैं. ये हमने प्रीवियस पे डिस्कस किया था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो एक टेक्निक है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए. तो जहां एनालॉग डाटा डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना होगा तो हम पीसीएम यूज करते हैं. एंड सोनेट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक ईथरनेट, like ATM, asynchronous transfer mode, which we have already discussed. So this is one of the latest technologies which is used for high-speed data transmission over optical network, and because the optical fiber network is used, the data transmission rate is very high, and normal optical fiber transmission, optical fiber communication, optical fiber network is used as backbone network. SONET independently developed in USA and Europe. This technology is developed in USA and Europe, and there are different standards for USA and Europe. So SONET, Synchronous Optical Network by ANSI. This is again an organization. ANSI stands for American National Standard Institute. This is NPO, which is non-profit organization, and this organization means ANSI is used to develop different standards. So SONET is developed by ANSI. यूएसए में, कनाडा में और जापान में जो स्टैंडर्ड यूज होता है दैट इज T1 स्टैंडर्ड. सो T1 स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन यूएसए, कनाडा एंड जापान, and for other countries the standard is E1. So there are two standards for SONET.
One is T1 standard, second is E1 standard. T1 standard is for USA, Canada and Japan, and E1 standard is for other countries. And this technology is being used over existing infrastructure. Again and again, we have discussed in many topics that the existing network was used to provide new services. Like we have talked about PTCL infrastructure, PSTN infrastructure, which was developed for voice transmission, but nowadays PSTN and PTCL is providing data services. So it means that existing network is used, existing infrastructure is used for different types of communication. And standard multiplexing techniques are used over here because when we use optical networks, there will be many users who are going to transfer data. So multiplexing technique is very important. Over here, a new multiplexing technique is used, which is orthogonal frequency division multiplexing technique. So multiplexing technique is also used over here. Second point is SDH, which is synchronous digital hierarchy, and this standard is developed by ITU-T, International Telecommunication Union for Telecommunication. So ANSI and ITU-T, these are two non-profit organizations which are developing standards for SONET and SDH, and these two technologies are used to transfer data with the help of optical fiber network, which is fastest communication system for data as well as voice. SONET system, there are three basic components over here. First one is signals, second is devices, third is connections. So first component is signal. Whenever we have to transfer data, data must be converted in the form of signals. And there are two types of signals, analog signal and digital signal. Normally, voice is converted into analog signal, and the data, which may be in the form of text, which may be in the form of audio file, which may be in the form of video file, which may be in the form of different types of multimedia messages. So all these type of data must be converted into digital data, and that digital data must be converted into digital signals. So analog and digital, these are two types of signals which are used for the data transmission. Second component is device. In the next slide, we will study about multiple devices of SONET in detail. And the last point in this slide is connection. So how we will connect multiple devices of SONET, inshallah, in the next some slides we will see. But these are three basic components of SONET system. There must be signal, it means there must be data which will be converted into signal. Second, device, it means the signal will be transmitted with the help of any device. And the third one is connection. It means SONET device must be connected to another SONET device, and that device must be connected to another device, and ultimately the combination of these devices or the combination of these multiple networks will help to transmit signal from one location to another location. SONET system. In the previous slide, we have just discussed that there are three basic components of SONET system, and the component number one is signal. So in this slide, we will study in detail about signals. Point number one, electrical signaling levels called synchronous transport signals or STS. बेसिकली STS जिस तरह से आप इस डेफिनेशन में देख रहे हैं, इसमें सिग्नलिंग लेवल की हम बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग लेवल की बात करते हैं.
इट मीन्स जब हमारा डाटा कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल दैट मे बी एनालॉग सिग्नल और दैट मे बी डिजिटल सिग्नल, उस सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक वायर चाहिए, दैट मे बी ट्विस्टेड पेयर वायर, दैट मे बी कोएक्सियल केबल और दैट मे बी फाइबर ऑप्टिक केबल. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सोनेट सिस्टम, सो देयर विल बी ऑप्टिकल फाइबर केबल. अब ऑप्टिकल फाइबर केबल पर वो जो सिग्नल ट्रांसफर होगा, उस स्पेसिफिक केबल पर सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल है, उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन को हम इस फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं. और इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है एसटीएस में, ये बेसिकली हमारे सिग्नल के लिए बेस लाइन का वर्क करती है. तो एसटीएस इज बेस लाइन फॉर सिग्नल एंड दिस इज electrical signaling level which is used for data transmission in SONET. Second point, the corresponding optical signals are called optical carriers. हम नेटवर्क्स में कैरियर की बात करते हैं. सो कैरियर इज अ वे टू ट्रांसफर डेटा. कैरियर इज अ वे टू ट्रांसफर सिग्नल्स. इसमें हम कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. सो ऑप्टिकल कैरियर जो सोनेट में है उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं ऑप्टिकल कैरियर के, और वो लेवल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लेवल्स को. ऑप्टिकल कैरियर में जो लेवल हम यूज़ करते हैं सोनेट में, वो ऑप्टिकल कैरियर लेवल 1 है, इसी तरह से 3 है, 9 है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है, 48 है, 96 है और 192 है. So these are different optical carrier level. मैं रिपीट कर देता हूँ. ऑप्टिकल कैरियर जो लेवल हैं दैट इज 1, 3, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 96 एंड 192. अभी जो डिफरेंट लेवल्स हैं इस पर डेटा ट्रांसमिशन रेट डिफरेंट है. मैं आपको फर्स्ट और लास्ट का डाटा रेट बता देता हूँ, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा. ऑप्टिकल कैरियर अगर हम 1 की बात करें, उसका डाटा रेट जो अप्रॉक्सीमेटली डाटा रेट है वो 51.84 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, और ये मल्टीप्लेक्स्ड होगा, मल्टीपल यूजर का डाटा उस ऑप्टिकल कैरियर 1 पर ट्रांसफर होगा. और जो लास्ट है लेवल ऑप्टिकल कैरियर लेवल 192, उसका डाटा रेट अप्रॉक्सीमेटली 9953.280 मेगाबिट्स पर सेकेंड है. मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपने ऑप्टिकल कैरियर 1 और जो मैंने डिफरेंट लेवल्स बताए हैं 192 तक, इन्हें एक्सप्लोर करना है तो आप देखेंगे डिफरेंट ऑप्टिकल कैरियर के डिफरेंट लेवल का डिफरेंट डाटा रेट होगा. लास्ट पॉइंट, STH specifies a similar system called a STM, Synchronous Transport Module. STH, this is another specification which we have discussed in the previous slide, that was synchronous digital hierarchy. This is like same about SONET, but this system was developed by ITU-T and SONET was developed by ANSI. And over here again there are different levels. So STM level, I am explaining those levels. STM level 4, 16, 64 and 256. So there are these different levels, and the data rate of STM level 4 is 622.080 megabits per second. So this SONET system or STH is developed for high data transmission over optical fiber network. SONET system devices. So this is second component of SONET system. First component was signal, just we have discussed in the previous slide, and the second is devices, which we will study in the next slide as well. So first of all is STS multiplexer. So what is STS? STS is synchronous transport signal, and multiplexer we will study in next slide in detail. Second is again STS,
demultiplexer, next is regenerator, next is add drop multiplexers, and the last one is terminal. So over here we have to use 5 devices. Device number 1 is STS multiplexer, device number 2 is STS demultiplexer, device number 3 is regenerator, device number 4 is add drop multiplexer, and the device number 5 is terminals. So these 5 devices, or the combination of these 5 devices, make a SONET system. So dear students, this is a diagram of SONET system in which multiple devices are connected. We will study in next slides about all these devices, but over here I am explaining briefly. First of all, you have seen on the right and left side the device T, which is basically terminal. So what will be terminal? Terminal is basically sending or receiving device, source or destination, sender or receiver, transmitter or receiver. It means a device which will connect to SONET system and a device which will also connect to SONET system for the transmission, for the receiving of data will be terminal. So एक तरफ टर्मिनल वो डिवाइस है जो सेंडर है और दूसरी तरफ टर्मिनल वो डिवाइस है जो रिसीवर है. नेक्स्ट इज STS MUX. मल्टीपल डिवाइसेस क्योंकि कनेक्ट हैं STS मल्टीप्लेक्सर के साथ, STS सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल, तो मल्टीपल डिवाइस का डाटा कंबाइन होगा तो मल्टीप्लेक्सर के साथ अटैच है. और आप जानते हैं मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मैनी टू वन. तो ये मल्टीपल डिवाइसेस के सिग्नल्स को एक स्पेसिफिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक और उसके बाद सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा. उसके बाद आप मक्स के साथ, STS मक्स के साथ आप जो डिफरेंट लाइंस देख रहे हैं और वो लाइन ADM के साथ अटैच हैं. सो दीज आर इंटरफेसेस और ADM इज एट ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर. सो एट ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, इसके बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. और एट ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर इज कनेक्टेड टू अगेन STS डीमल्टीप्लेक्सर. अब क्योंकि मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट थे और इस डायग्राम में 3 यूजर्स आपको लेफ्ट साइड पर जो 3 टर्मिनल्स कनेक्ट नजर आ रहे हैं, रिसीविंग साइड पर इन 3 टर्मिनल्स या 3 यूजर का डाटा सेपरेट होना चाहिए. सो डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड फॉर one to many, means it will receive a single signal and that signal will be demultiplex according to users which the data have sent. तो इसमें मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर मेन डिवाइसेस हैं. उसके बाद इंटरफेसेस हैं which are connecting point and the ADM is at drop multiplexer. So dear students, SONET system, this is device 1, device 2. So 2 devices जो हमने अभी previous slide में जिनका जिक्र किया, उन 2 devices की discussion again. STS multiplexer and demultiplexer. Point number 1, it provides the interface between an electrical trajectory network and the optical network. तो ये basically हमारा वो network, हमारी वो devices जो हम यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए, जिसको अभी हमने टर्मिनल डिवाइस की बात की थी. तो टर्मिनल डिवाइस का जो हमारा एक पूरा नेटवर्क है, जो लैपटॉप हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस हैं प्रॉपर जो हम यूज करते हैं. उसके बाद हम उन डिवाइसेस को अटैच करते हैं STS मल्टीप्लेक्सर के साथ. सो दिस इज इंटरफेस, डेफिनेटली दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट आवर टर्मिनल with this multiplexer, STS multiplexer. So STS multiplexer is used to connect terminal. Second point, STS multiplexer multiplexes an electrical signal into corresponding optical signal. This is an important point. Again, I am going to discuss in detail. Terminal is a digital device, that is laptop or that is personal computer,
which will generate digital data, and that digital data will be converted into digital signal, and that digital signal will be transmitted over wire, and that is electrical signal. And after that, that electrical signal must be converted into optical signal, because now we are going to use optical fiber network, and in optical fiber network the signal must be transmitted into optical signal. Third point, STS demultiplexer, an optical carrier signal into corresponding electrical signal. रिसीविंग साइड पर जैसे ही मल्टीपल सिग्नल्स डीमल्टीप्लेक्सर को रिसीव होंगे और वो मल्टीपल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सिग्नल होंगे, वो सिंगल सिग्नल मल्टीपल सिग्नल्स में चेंज होगा क्योंकि वो मल्टीपल यूजर का डाटा था, और वो मल्टीपल यूजर्स के सिग्नल पहले वो ऑप्टिकल सिग्नल्स होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होंगे, और उसके बाद रिसीविंग साइड पर यूजर उस डाटा को व्यू कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट, मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल यूजर से डाटा रिसीव करेगा और उसके बाद एक सिंगल लाइन पर डाटा ट्रांसफर करेगा. दैट सिंगल लाइन इज ऑप्टिकल कैरियर एंड दैट इज ऑप्टिकल सिग्नल. रिसीविंग साइड पर डीमल्टीप्लेक्सर उस ऑप्टिकल सिग्नल को, जो मल्टीपल यूजर के डाटा का एक ऑप्टिकल सिग्नल था, उसको डीमल्टीप्लेक्स करते हुए मल्टीपल यूजर के डाटा को रिसीविंग साइड पर उसी तरह से यूजर्स को फॉरवर्ड करेगा जिस तरह से यूजर ने वो डाटा ट्रांसफर किया होगा, यूजर ने डाटा ट्रांसमिट किया होगा. सो मल्टीप्लेक्सर इज लाइक मैनी सिग्नल वन आउटपुट, मैनी इनपुट वन आउटपुट, एंड डीमल्टीप्लेक्सर one input and many output. Sonnet system, second component was regenerator. Regenerator is a repeater, extend the length of the links. So dear students, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक लाइव के एग्जांपल ले लेते हैं. नॉर्मली जब आप क्लासरूम में होते हैं और टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो एक क्लास तक, वो क्लास एंड तक उसका जितना भी उस क्लास का डायमीटर है, उस क्लास की रेंज है, तो एंड तक स्टूडेंट्स उस टीचर की आवाज़ को सुन रहे होते हैं. लेकिन अगर टीचर फर्स्ट फ्लोर पर है तो सेकंड फ्लोर तक टीचर की आवाज़ डेफिनेटली नहीं जाएगी. इसी तरह से अगर टीचर रूम नंबर 1 में है तो रूम नंबर 6 तक टीचर की आवाज़ नहीं जा सकती. अगर हमें रूम नंबर 1 से रूम नंबर 6 तक टीचर की आवाज़ को मूव करना है, स्प्रेड करना है, तो हम माइक सिस्टम यूज़ करते हैं, साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं, जो उस टीचर की आवाज़ को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड, रूम नंबर 1 से रूम नंबर 6 तक ट्रांसमिट करने में हमारी हेल्प करते हैं. उसी तरह से जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो डाटा एनालॉग है या डिजिटल है, कुछ टाइम के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद उस डाटा के सिग्नल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं. If we talk about analog data transmission, so analog signal is transmitted from source to destination. After 5 kilometer, this is approximately distance, after 5 kilometer, the strength of analog signal will be going weaker. Then we have to use a device which is amplifier, and amplifier is used for analog signal. Analog signal की strength को boost up करने के लिए हम amplifier use करते हैं, एंड डिजिटल सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करने के लिए हम रिपीटर यूज करते हैं. जिस तरह से मैंने एनालॉग सिग्नल की प्रॉक्सिमेटली जो डिस्टेंस बताई वो 5 किलोमीटर, तो डिजिटल सिग्नल का जो प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस है दैट इज 2 to 3 किलोमीटर. सो आफ्टर 3 किलोमीटर the strength of digital signal will be going weaker. Then we have to use a device which is repeater. So amplifier is regenerator for specific analog signal or amplification for analog signal, and repeater is used for digital signal. So regenerators are used for the boost of weaker signals. Next component of Sonnet system is add-drop multiplexer. Add-drop multiplexers allow insertion and extraction of signals. First of all,
व्हाट विल बी इंसर्शन? अगर हमें मल्टीपल सिग्नल को एग्रीगेट करना है, मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन करना है, तब हम इस पॉइंट को यूज करते हैं इंसर्शन को। तो इंसर्शन के लिए हम एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। तो इंसर्शन के लिए हम डेफिनेटली एड पोर्शन यूज करेंगे उस मल्टीप्लेक्सर का। और व्हाट इज ड्रॉप पोर्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर? दैट इज एक्सट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली जब हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं तो हमारे सिग्नल के साथ मल्टीपल इरेलीवेंट सिग्नल्स अटैच हो जाते हैं, जिसको हम नॉइज कहते हैं। और इसी तरह से और डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जिसको आपने डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के तौर पर पढ़ा होगा, जो हमारे अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, जिसमें नॉइज है, जिसमें क्रॉस टॉक है, जिसमें इसी तरह से अटेनुएशन है, जिसमें डिले है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स which will degrade the quality of our original signal. So these signals must be discarded, or these signal must be dropped. If these signals, which are unwanted signal, let's suppose I'm talking about noise, if this unwanted signal will couple with our original signal, then the quality of our signal will be degraded. इसके एग्जाम्पल इस तरह से आप ले सकते हैं। आप क्लास में हैं और आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं और टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, टीचर आपको टीच करते हैं, और बाहर कॉरिडोर में शोर स्टार्ट हो जाता है, नॉइज स्टार्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली आप क्लास में डिस्टर्ब होंगे, आप बेहतर तरीके से पढ़ नहीं सकेंगे। सो इट मीन्स जो बाहर नॉइज है, जो शोर है, उसकी वजह से आपका इंटरनल स्टडी, इंटरनल एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। सो दिस इज लाइक दैट the noise is unwanted signal for our original signal. So add drop multiplexer is used for extraction and insertion of different signals, so that the quality of our original signal must not be degraded. This is our next topic, which is sonnet layers. The sonnet standard includes 4 functional layers, and these layers are path layer, line layer, section layer, and photonic layer. So photonic layer is based on physical layer of OSI, Open System Interconnection Reference Model, and the path layer, line layer, and section layer is based on data link layer of OSI, Open System Interconnection Reference Model. So first 3 layers of sonnet depend on data link layer or fall in data link layer, and the last photonic layer is fall in physical layer. So you have studied OSI reference model, which is very important model. OSI reference model is very important model in our networks. There are 7 layers, and these 7 layers are used for different tasks. So these layers are physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. So likewise, Sonnet has 4 different layers. In next slide, we will study in detail about these layers. But again, the concept is logical, like OSI reference model is logical model, so this sonnet layer model is also a logical model and is divided into 4 layers. Sonnet layers. So dear students, as we have discussed in the previous slide, that sonnet layers are divided into 4 sublayers: path layer, line layer, section layer, and photonic layer. So in this slide we will study about first and second layer. So first of all is path layer. The path layer is responsible for the movement of a signal from its optical source to its optical destination. So this is very clear that this layer is responsible for the transmission between optical devices. It means when the data will be transmitted from the terminal, the next device is STS multiplexer, and when the data will be received by the STS demultiplexer,
So STS multiplexer and STS demultiplexer, these are optical devices, and between these devices there is optical path. So optical source is STS multiplexer and optical destination is STS demultiplexer. There are some other features of this layer. One is PTE. We use path terminating equipment. हम path terminating equipment भी इसी लेयर पर यूज करते हैं और इस लेयर का एक और इम्पॉर्टेंट टास्क पेलोड को मैप करना है। जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो डिफरेंट हेडर्स के साथ अटैच होने के बाद ट्रांसफर होता है और पेलोड इज डाटा। डाटा का एक और नाम पेलोड भी है। तो जब मल्टीपल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए नेसेसरी है वो यूज होगी, वो इसी लेयर पर पेलोड उसके साथ अटैच होने के बाद, मैप होने के बाद ट्रांसफर होगा। और इस लेयर का एक और टास्क एंड टू एंड डाटा ट्रांसमिशन है। एंड टू एंड बेसिकली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, दैट इज एंड टू एंड डाटा ट्रांसफर। अब इसमें एंड टू एंड डाटा ट्रांसफर बेसिकली टर्मिनल टू टर्मिनल होगा। तो टर्मिनल इज सेंडिंग डिवाइस एंड टर्मिनल इज रिसीविंग डिवाइस। तो एक तरफ टर्मिनल सेंडिंग डिवाइस है विच इज एंड डिवाइस, और दूसरी तरफ जो टर्मिनल है वो रिसीविंग डिवाइस है, दैट इज अगेन एंड डिवाइस। सो between or among end-to-end devices, data transmission is responsible of this layer। तो इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड टू एंड डाटा ट्रांसमिशन। तो इस तरह से इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पाथ टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, हम पेलोड को मैप करते हैं, हम एंड टू एंड डाटा ट्रांसमिशन करते हैं, और इसके अलावा हम ऑप्टिकल सोर्स और ऑप्टिकल डेस्टिनेशन के दरमियान डाटा ट्रांसफर करते हैं। Second is line. The line layer is responsible for the movement of signal across a physical line. STS multiplexer and add drop multiplexers provide line layer functions। इसमें डेटा की मूवमेंट फिजिकल लाइन पर है, जो फिजिकल लाइन पर हम डेटा मूव करते हैं, और इसमें हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज लाइन टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, LTE। और इस डिवाइस का एक पर्पस सिंक्रोनाइजेशन और मल्टीप्लेक्सिंग भी है। और एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर जो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर इज अ टाइप ऑफ LTE। जो अभी मैंने कहा लाइन टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट हम यूज करते हैं इस लेयर पर। सो LTE एन एग्जांपल ऑफ एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, जो हम एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। Sonnet layers. Next layer is section layer. Section layer overhead is added to the frame at this layer and control errors। हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया डाटा को पेलोड की फॉर्म में, और डाटा के साथ हम डिफरेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अटैच करते हैं ताकि हमारा डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक प्रॉपर रिसीव हो सके। तो सेक्शन लेयर इज यूज to attach different headers so that data must be transmitted error free। So section layer overhead is added। Basically what is overhead? Overhead is extra information which is used to attach the original frame, original data, to control error, for correct data transmission, and so on। Next layer is photonic layer। It includes physical specification for the optical fiber channel। हर एक स्पेसिफिक लेयर पर डिफरेंट डिवाइसेस वर्क करती हैं, हर एक स्पेसिफिक लेयर पर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया वर्क करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो हम बेसिकली लास्ट लेयर पर यूज करते हैं विच इज आवर फिजिकल लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल, एंड लाइकवाइज कोएक्सियल केबल, likewise twisted pair cable, and so on। And each cable which is optical fiber cable, which is twisted pair cable, which is coaxial cable, all these cable have different types of specification। So optical fiber cable have different specification which may be voltage level or any other specific specification। This is at photonic layer।
And the last point is NRZ encoding with the presence of light representing 1 and the absence of light representing 0. In data communication computer network, you have studied different encoding technique, and NRZ is one of them, non-return to zero level. So in this technique, if the data is transmitted in the form of multiple stream of bits, multiple ones, multiple zeros, so if we will use NRZ encoding scheme, non-return to zero, 1 will be yes and 0 will be no. 1 will be high and 0 will be low. So this encoding technique is also at photonic layer. SONET network, dear students, this is our second last slide of this lecture. Linear network, which is point-to-point network. A point-to-point network is normally made of an STS multiplexer, an STS demultiplexer, and 0 or more regenerators with no add drop multiplexer. नॉर्मली अगर हमें स्मॉल नेटवर्क एस्टेब्लिश करना हो तो हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को प्रेफर करते हैं. इसमें आप देखें सेंडर और रिसीवर हैं जो बेसिकली टर्मिनल्स हैं, और STS मक्स और STS टी मक्स जो बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो हमारे ऑप्टिकल सिग्नल को कैरी करेंगी, और इन बिटवीन लाइन है जो हमारे सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होगी. अब इसमें एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर भी नहीं है और इसमें रीजनरेटर भी नहीं है. रीजनरेटर का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, जिसमें हमने बात की थी कि अगर हमें डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन करनी है और अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर हमें डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं तो हम रीजनरेटर या रिपीटर यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल नेटवर्क एंड दिस इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ regenerator or repeater over here. And likewise, there is no need to add drop multiplexer. Add drop multiplexer will be needed in multi-point network, which we will study in next slide. This is our last slide of this topic, SONET network multi-point. A multi-point network uses a drop multiplexer to allow communication between several terminals. So dear students, you can see there are multiple terminals, and terminal 1, terminal 2 and terminal 3. So it means there are multiple devices which are going to send or receive data, and there is STS multiplexer, STS demultiplexer, and between STS multiplexer and STS demultiplexer is add drop multiplexer. We have studied about add drop multiplexer function, which will add or which will drop signal. So this is used for multi-point network, in which we will use ADM as well as regenerator, which is not shown over here, but regenerator or repeater will also be used when the data will be transmitted more than 3 kilometer distance. So in this simple diagram, we can see SONET network in multi-point mode. So dear students, thank you very much for your concentration, for your learning, for your passion. I hope best of luck for all of you always.